बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं केक बनाने लगी हूँ, मार्बल केक। ये मैं इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधा कप मैंने दूध लिया है और 1 कप मैंने ऑयल लिया है। आप तो मक्खन ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। 1-2 खाने के चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच तिल लिया है। आपका जो दिल चाहे ले लें, अखरोट ले लें या वो ले लें, बादाम। 1 चौथाई चम्मच नमक, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 कप मैंने शुगर ली है पिसी हुई। और ये वाले टूटी फ्रूटी एसेंस है, इसके 2 कतरे डालेंगे। आपका दिल चाहे डालें, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप ना डालें, आपकी चॉइस है। और ये 4 अंडे लिए हैं और ये स्पून है इसके, जिससे मैंने ये सारे माप किए थे। अब मैं बनाने लगी हूँ।
और मैं इसको आधा आधा करूँगी। आधे में मैं कोको पाउडर डालूँगी और आधा मैं ऐसे ही डालूँगी। इनके कोको पाउडर वाला थोड़ा है, लेकिन ये वाला भी आता है वाइट वाला। इसको आप आई से ग्रीस कर लें। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, यकजान हो जाए।
आप स्टिक से, शार्पली स्टिक से आप ऐसे डिजाइन भी बना सकते हैं। ये मैंने छोटा स्टैंड लिया, इसको मैं इस कुकर के अंदर रखूँगी। अब इसके ऊपर मैं ये बॉल रखूँगी ऐसे करके, आराम से सीधा करके। अब इसको मैं 1 मिनट गैस को तेज़ करूँगी, उसके बाद मैं इसको स्लो कर दूँगी। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप ऐसे बंद करते। ये मैंने रबड़ पुरानी ली है ताकि ये ख़राब हो जाती है। ऐसे मैंने एक ही लगाई हुई है, वो पुरानी है, यूज़ नहीं होती, मैंने वो लगा ली है। फुल कर लेंगे ऐसे 1 मिनट तक, जाके ये सारा गर्म हो जाए। उसके बाद इसको स्लो कर दें 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद फिर आप इसको 30 से 35 मिनट तक इसका टाइम है, ये देखिए। जब 30 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको ये शाशलिक स्टिक डाल के देखने लगी हूँ। ये बिल्कुल साफ है, उससे नहीं लगा इधर।